श्रीबलभद्रस्तवराज। दुर्योधन उवाच स्तोत्रं श्रीबलदेवस्य प्राणविपाकमहामुने वद मां कृपया साक्षात् सर्वसिद्धिप्रदायकम्। प्राणविपाक उवाच स्तवराजं तु रामस्य वेदव्यासकृतं शुभं सर्वसिद्धिप्रदं राजञ्च शृणु कैवल्यदं नृणां। देवादिदेव भगवन् कामपाल नमोऽस्तु ते, नमोऽनन्ताय शेषाय साक्षाद्रामाय ते नमः। धराधराय पूर्णाय स्वधाम्ने शिरपाणये सहस्रशिरसे नित्यं नमः संकर्षणाय ते। रेवतीरमणत्वं वै बलदेवाच्युताग्रजः हलायुधप्रलम्बघ्न पाहि मां पुरुषोत्तम। बलाय बलभद्राय तालाङ्काय नमो नमः। नीलाम्बराय गौराय रोहणेयाय ते नमः। धेनुकारिर्मुष्टिकारिः कूटारिर्बल्वलान्तकः रुक्म्यरिः कूपकर्णारिः कुम्भाण्डारिस्त्वमेव हि। कालिन्दीभेदनोऽसि त्वं हस्तिनापुरकर्षकः द्विविदारिर्यादवेन्द्रो व्रजमण्डलमण्डनः। कंसभ्रातृप्रसन्तासि तीर्थयात्राकरः प्रभुः। दुर्योधनगुरुः साक्षात् पाहि पाहि प्रभो त्वतः। जय जयाच्युतदेव परात्पर स्वयमनन्तदिगन्तगतश्रुत। सुरमुनीन्द्रफणीन्द्रवरायते मुसलिने बलिने हलिने नमः। यः पठेत् सततं स्तवनं नरः स तु हरेः परमं पदमाव्रजेत्। जगति सर्वबलं त्वरीमर्दनं भवति तस्य धनं स्वजनं धनम्। इति श्रीगर्गसंहितायां बलभद्रखण्डे बलभद्रस्तवराजवर्णनं नामैकादशोऽध्यायः। बलभद्रस्तवराजसम्पूर्णम्।